A very good evening to all my dear students, and we are meeting again with a new topic, that is lost spring stories of stolen childhood. Okay, it is a very emotional, touching, and a very beautiful compilation of the stories related to the issue of child labor. Okay, एज वी से दैट चिल्ड्रन यानी कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन आवर कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो देर आर मैनी किड्स, दुनिया में ऐसे बहुत किड्स हैं दोज हु आर डिप्राइव्ड ऑफ अ प्रॉपर चाइल्डहुड. So Lost Spring Stories of Stolen Childhood, as the title is suggesting, जैसा कि हमारी स्टोरी का ये टाइटल सजेस्ट कर रहा है, it deals with the issue of child labor. और इन इंडिया स्पेशली इन आवर कंट्री ये जो चाइल्ड लेबर का इशू है ये बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट है. एंड द रीज़न फॉर इज दैट द एक्सट्रीम पॉवर्टी. ओके, as we know that a majority of our population is being suffering from पॉवर्टी. सो दैट्स वाई बच्चों को वो प्रॉपर राइट और उनका वो जो उनका राइट है एजुकेशन का, ओके, प्रॉपर मील्स का, प्लेइंग का, वो काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं. एंड ये जो चाइल्ड लेबर का जो सिनेरियो होता है, ये जो पॉवर्टी का इशू है, इट गोज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस चेन. Okay, and get the children to live a normal childhood. So in this story we are going to recollect two accounts. Story is carrying the story, that means story के अंदर दो स्टोरीज हैं, दो शॉर्ट स्टोरीज हैं जो ये शो करती हैं कि चाइल्ड लेबर किस तरीके से इश्यूज एक बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है. ओके, so deals with the issue of child labor, vagaries of child abuse. And we cannot imagine even the thing कि उन poor innocent kids पर how do they experience, उनको कैसा feel होता है when they are doing with all those kind of stuff, that काम करना, और काम भी इस तरीके के करना. We have seen many children involved in making crackers, bangles, और भी ज़्यादा dangerous works, engaged as help houses, working in houses, doing all kinds of stuff that leads to their abuse. Okay, abuse of their rights. और ये सारे issues आप अपने answers में write down कर सकते हैं. abuse of the right to have a normal childhood. ये उनका राइट है. ओके, दिस राइट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन देता है दैट एवरी चाइल्ड शुड बी गिवन फ्री एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स. लेकिन देर आर मैनी चिल्ड्रन इन इंडिया हु आर डिनाइड दिस बेसिक राइट. अगेन क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू उनके सामने आता है दैट इज द इशू ऑफ सर्वाइवल. ओके, उनके पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा जो इशू आता है दैट इज सर्वाइवल. और ये सर्वाइवल वर्ड कई बार टेक्स्ट में यूज ऑन हुआ है, इसीलिए यूज ऑन हुआ है कि सर्वाइवल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर द पेरेंट्स. और इसके नीचे जो चाइल्डहुड है वो दब कर रह जाता है. ब्रोकन ड्रीम्स, ways to combat child labor. So you can also expect a question ki after going through the accounts, what are the ways, what are the means that you can suggest as an enlightened citizen of India. आप किस तरीके के measures suggest कर सकते हैं कि हम child labor को completely wipe off कर दें. So I was abuse of right to have a normal childhood. तो ये जो चाइल्ड लेबर होता है दैट इज लीगली बैंड. लीगली ये चीज़ कम्प्लीटली बैंड है, लेकिन फिर भी आप बहुत सारे बच्चों को देख सकते हैं. यू कैन सी रैग पिकर्स एट द रेलवे स्टेशन, एट बस स्टैंड्स. ठीक है, रैग पिकर्स, चिल्ड्रन हु सर्च द गार्बेज. जैसे कि स्टोरी में भी एक ऐसे ही रैग पिकर जो बच्चा है जो रैग पिकिंग करता है उसकी स्टोरी है. तो आप ये ऐसी प्रोमिनेंट प्लेसेस पर देख सकते हैं चिल्ड्रन हु आर बेगिंग, जो बेग करते हैं, then who are सर्चिंग द गार्बेज टू
find out something that can help them in their survival again. तो सर्वाइवल से बड़ा कुछ नहीं है उनके लिए. तो वहीं पर जो ड्रीम्स हैं, वहीं पर जो सपने हैं, वो कम्प्लीटली ब्रोक ऑफ हो जाते हैं, टूट जाते हैं. एंड द मोस्ट ट्रैजिक पार्ट इज, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि ये जो सीरीज है ये चलती रहती है, राइट. सो नाउ लेट अस टू हैव अ नॉर्मल चाइल्डहुड. I have included a picture here in the note section कि after seeing the picture, okay, क्योंकि ये picture उसी तरीके के बच्चों की image है जो अभी आप स्टोरी में पढ़ेंगे, ठीक है. तो ये एक पिक्चर है एक रैक पिकर बच्चे की. ओके, द चाइल्ड इज इन्वॉल्व्ड इन रैक पिकिंग. And if you can see carefully the picture, the person is dirty, okay, the child is dirty, shabby, and we can say with torn clothes and perhaps no shoes. क्योंकि इनफैक्ट आई हैव सीन मैनी चिल्ड्रन जो रैक पिकिंग करते हैं या जो गार्बेज को सर्च ऑन करते हैं, दे आर नॉट वेयरिंग शूज, नंगे पैर होते हैं. एंड इवन इन हार्डेस्ट ऑफ वेदर, विंटर्स में, रेनी सीजन में, they don't have any shoes because they don't have that much of money to afford those basic things. उनके लिए वो लग्जरीज हो जाती हैं लाइफ की बहुत बड़ी. और द पीपल हु कैन अफोर्ड, उनके लिए ये बहुत ही सिंपल एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं. सो इफ यू केयरफुली लुक एट द पिक्चर, अगर आप इस पिक्चर को केयरफुली लुक ऑन करेंगे, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द चाइल्ड. ओके, perhaps he has not taken a bath for many days, the hair has grown up. Okay, तो ये कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते कि जो ये इमेज है ये एक नॉर्मल चाइल्डहुड की है, ठीक है, कि इस तरीके का बचपन कोई नहीं चाहेगा. nobody will like to lead such kind of life, fine. So this is the thing that now, but one thing that is there, okay, if you look carefully at the picture, you can still see the smile, okay, and the spark in eyes. So यही smile और यही spark आपको जो दो चिल्ड्रन हैं, दो बच्चे हैं स्टोरी में, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को सुनने के बाद मिलेगी कि डिस्पाइट बीइंग फेस टू एब्जेक्ट पॉवर्टी मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है, कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी उनके पेरेंट्स पूरी नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी दे हैव द दैट स्पार्क कि यस कुछ करना है लाइफ में, वी वांट टू गेट समथिंग बेटर इन लाइफ. This is a few lines about the author. The okay, Lost Spring Stories of Stolen Childhood about the author Anis Jung. She was born in Rourkela and she spent her childhood in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers, so writing we can say is in her blood. Okay, she has been an editor also, and she has written for various newspapers also. It is the following in expert means expert means कि a part of that part from her book has been taken up. Title Lost Spring Stories of Childhood. So there are other stories also in this collection which she has written, and in your syllabus you are having 2 stories. She analyzes the grinding poverty. Grinding you can again say extreme or abject poverty we can say. Abject and extreme poverty, fine, and traditions which condemn these children to a life of exploitation. तो चाइल्ड लेबर क्या है? एक बेसिकली इट इज एन एक्सप्लॉयटेशन ओनली. ओके, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर लाइफ, ऑफ देयर ड्रीम्स. एक्सप्लॉयटेशन इज व्हेन यू आर बिट्रेइंग समवन. आप किसी का मिसयूज कर रहे हैं, आप उसको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं फॉर योर ओन सेल्फिश रीजंस. So now let us begin with the text. Sometimes I find a rupee in the garbage. Okay, so basically there are 2 stories. One is of the boy who is a rag picker, as we came to know, and the other is the story of a little boy whose family is involved in making bangles. जो चूड़ियाँ होती हैं
और वो किस तरीके से बनती हैं. Some places, in India we have this place called Firozabad that is famous for that thing. Okay, so that is the thing. तो दो स्टोरीज इसमें इन्वॉल्व हैं एंड देन वी आर गोइंग टू you know continue with the stories, and then we will focus on the important things and the kind of question answers that you can expect. So sometimes I find a rupee in the garbage. Why do you do this? So the author is asking questions to the child, and the child name is Sahib. Actually, his real name is Sahib Alam. Okay, that means Lord of Universe, Sahib Alam. तो बेसिकली नाम से आपको ऐसा लगेगा दैट इज द नेम ऑफ अ किंग और ओके और अ रॉयल पर्सन, बट एक्चुअली में द पर्सन जो बच्चा है दैट बिलोंग्स टू वेरी लो स्ट्राटा, whom I encounter every morning scrounging for gold. Scrounging is what? Looking. Okay? Now we can just imagine कि मतलब गार्बेज में इतने छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अपना हाथ डालकर and it is extremely dirty and unhygienic for them also. They can get any kind of infection, they are prone to diseases by and they're risking their life for what? For surviving. So you can add it on that it is very ironic that they have to risk their life for the purpose of surviving, to survive, to keep on survive. Okay, survival. Looking for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Gold. So can up we must be thinking that how can gold come in the garbage dump? So the writer is it is not, she is not referring to the actual gold, but उन बच्चों के लिए वो क्या gold हो सकता है, जैसे कि they can get a coin, or they can get shoes or some basic utility item, anything like that. Actual gold नहीं, but एक एक्चुअल गोल्ड नहीं, बट इस तरीके का आइटम कि जो उनकी लाइफ को थोड़ा इजी बना दे. ओके, साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो amidst the green fields of Dhaka. So basically, he is a refugee. The refugee means the people who have come from another country, who are displaced. Okay, and they have come here in search of a proper life and proper livelihood. लेकिन ironically होता क्या है? For example, he has come from Bangladesh. Okay, तो refugees जो वहाँ से आए हैं, they are forced to live that kind of life which is very harsh, जो बहुत ही हार्श है, और ना ही वहाँ पर उनके लिए प्रॉपर लाइवलीहुड है और ना ही प्रॉपर बेसिक लाइफ फैसिलिटीज है. हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, यानी कि देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. हिज मदर टेल्स हिम ही हैज नेवर सीन दैट प्लेस, और बहुत ही पहले मे बी उसने वो होम अपना घर छोड़ दिया, पेरेंट्स ने वो जगह छोड़ दी, तो ही इज नॉट एबल टू रिकॉल एनीथिंग. और काफ़ी सारे स्टॉर्म्स आए वहाँ पर जो उनके फील्ड्स और होम्स को सब बहा कर ले गए. सो दे हैव कम टू इंडिया फॉर अ बेटर livelihood. That's why they left looking for gold in the big city. So again and again, the word gold is being used. So you can, so you need to, clarify the meaning of the word gold. Yeah, actual gold की बात नहीं हो रही है. Gold is here referring, first में gold is referring to the basic utility items, और यहाँ gold है a better means of livelihood, better means of livelihood, income, जिससे कि वो अपनी लाइफ को प्रॉपरली जी पाए. I have nothing else to do, he mutters, looking away. तो she said कि क्या करते हो, ठीक है, तुम ऐसा क्यों करते हो, why are you what are you looking for in the garbage? Then what does the child answers? That he has nothing to do. Then she says that you should go to school. I say glibly, sadly, realizing immediately how hollow the advice must sound. मतलब ये कहना बहुत आसान है. The writer wants to focus on the point कि ऐसा हम बहुत easily कह देते हैं जो बच्चे हमें स्ट्रीट पर दिखते हैं, ठीक है, कि तुम ये सब क्यों करते हो, why don't you go to school? लेकिन the point is, how can they go to school when they don't have enough money, when they don't have enough sources, their parents don't have enough sources to send them to school, then how will they go to school? उनकी फीस
कौन पे करेगा? The writer. That's why she said it's a hollow piece of advice, right? There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. So that means in the place which they call home is devoid of basic facilities also. Okay, their home. The place is devoid of basic amenities of life. Basic amenities. So you can use the word amenities. That means facilities of life. And there is no school. Okay. So they are devoid of education also. Lack of education. तो इसीलिए they are not able to the break the chain. बचपन से वो वही काम करते हैं, and because they are uneducated throughout the life, they are not able to break the chain and opt for a better means of life. If I start a school, will you come? I asked half joking. राइटर ने बच्चे से पूछा कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूंगी तो तुम आओगे? then he said yes, smiling broadly. मतलब बच्चे ने उसी बात को सच माना. तो that's what does it show? That a child wants to go to school. Okay. So that's why I said that there is still a spark in their eyes. Okay, the child is eager to go to school. Nobody likes to lead this kind of life. Do you think anybody will like this kind of life? No. हर किसी को वो बेसिक फैसिलिटीज है और लाइफ में आगे बढ़ने के एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं. तो दिस चाइल्ड इज नो डिफरेंट. सर्कमस्टांसेस फोर्स करते हैं हमें इस तरीके की लाइफ जीने के लिए. But otherwise no one likes to do that. The child is eager to go to school and study despite the harsh circumstances. So this you can again go down in your answers. Despite harsh circumstances of life. Is your school ready? A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? तो मतलब वो बच्चा वो बात भूला नहीं है. And the promise, the half promise that the writer has made, it takes longer to build a school. ठीक है. I say embarrassed, ashamed of my own self कि मैंने एक झूठा promise किया उस बच्चे से, and उस बच्चे को मेरा वो promise याद है. That's why the child came running and asking to the author, is the school being there? But promises like mine abound in every corner of his bleak world. So this is an important line. Okay, कि इस तरीके के जो promises हैं वो उसके bleak world में, bleak मतलब no, with no hope. Okay, no hope. Basically it is kind of lightless world. यहाँ पर you can say no ray of hope. तो हर कोई आता है और प्रॉमिस कर जाता है कि यस हम आपकी लाइफ ऐसे करेंगे एंड लाइक दिस एंड दैट. स्पेशली पॉलिटिशियन जब आते हैं दे आस्क फॉर वोट्स, बट एक्चुअल में क्या होता है दैट दीज पीपल फॉर जनरेशन टू जनरेशन दे आर फोर्स्ड टू लीड दिस काइंड ऑफ लाइफ ओनली. I asked him his name. Sahib Alam, he announces. He does not know what it means. If we know its meaning, he would have a hard time believing it. Why? Because the meaning is Lord of the Universe. So this is ironic. Okay. And sarcastic at the part of writer. You can write it on sarcastic and ironic. So it's basically a sarcastic expression that she uses कि actually में the name means Lord of the Universe, but in reality he is not living that kind of life. Okay. He, unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like morning birds and disappear at noon. तो ये उनका पूरा रूटीन है डे टू डे एक्टिविटीज का जो बच्चे हैं. And Sahib is not alone. There are many other kids also involved in this kind of activities. तो उनका क्या रूटीन रहता है? Throughout the day they roam the streets. पूरी सड़कों पर घूमना है, and that too barefoot. Barefoot means okay, without shoes or chappal or anything else. So they appear like morning birds and disappear at noon. So it's a kind of simile that she has used here.
कि सुबह सुबह के पक्षियों की तरह आते हैं और दोपहर तक गायब हो जाते हैं. Over the months, I have to come to recognize each of them. Why aren't you wearing chappals? I asked him. My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. Even if she did, he will throw them off. He adds another who is wearing shoes that do not match. तो बेसिकली हर बच्चे के अपने अलग रीजंस हैं चप्पल या शूज नहीं पहनने के, बट द मेन रीजन दैट ऑल ऑफ देम आर हैविंग इज दैट दे डोंट हैव द मनी. ओके, ये सिर्फ वो बातें करने के लिए बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में जो रीजन यही है दैट दे आर सो पुअर दैट दे कैन नॉट अफोर्ड a pair of shoes, okay, a pair of footwear. And even some those who are wearing, okay, they are either wearing torn shoes, तो उनके लिए वो भी बहुत बड़ी लग्जरी हो जाती है that yes they are wearing shoes. उन्हें मैटर नहीं करता that even then if they are wearing it with a if they are torn or there are new holes, but they are happy कि at least जो पैरों में जूते तो हैं. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes. He's the third boy who has never owned a pair of his life. So you can see, you know, the misery, the kind of misery that children are being faced. Okay, so this is very touching, I would say, misery and pain that the children are being subjected to because of their poverty. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot. इज वन एक्सप्लेनेशन. तो मतलब कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑथर कि सिर्फ लैक ऑफ मनी ही नहीं होता, रादर वो एक ट्रेडिशन भी बन जाता है लोगों के. ठीक है. आई रिमेंबर अ स्टोरी then a man from UTP once told me it's a place. As a young boy, he would go to school where his father was a priest, and he would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. मतलब एक स्टोरी, एक एनेक्डोट जो ऑथर है वो शेयर करती है. 30 years later, I visited the town and the temple, which was now drowned in an air of rationalized, blossoming desolation. In the backyard, where lived the new priests, they were red and white plastic chairs. मतलब वो एक छोटे से बच्चे की स्टोरी सुना रही है कि ठीक है, जिसके फादर प्रीस्ट थे एंड वो जब भी जाता था टेम्पल तो वो शूज के लिए प्रे करता था, दैट ही वॉज नॉट हैविंग एनी शूज. और अब वो जब कुछ टाइम बाद उस जगह पर वापस जाती है द ऑथर, तो वहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया है. ठीक है. अ यंग बॉय ड्रेस इन ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज. I remember the pair another boy had made to the goddess, where he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess has granted his pairs. मतलब उस टाइम पर, that means around 30 years ago, even बच्चों को as a means of tradition ही नहीं पहनाए जाते थे, that they have to go barefoot. But now times have changed and even the people who who can afford it, जो उसको afford कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को शूज पहनाते हैं. दैट इज व्हाट द राइटर मीन्स. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माय नेबरहुड रिमेन शूलेस. तो बेसिकली शी वांट्स टू से कि अब टाइम कुछ चेंज हुआ है कि पीपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिशन बच्चों को शूलेस नहीं रखते. लेकिन अब भी देयर आर मेनी who are poor, who are extremely poor, they are forced to go shoeless. Okay. My acquaintance means you can say my meeting or my knowing of them. Okay. आपको जानना, किसी को जानना और फिर उनसे मतलब उनसे एक तरीके का रिलेशनशिप, एक बॉन्ड डेवलप करना. With a barefoot rag pickers leads me to Simapuri. Now Simapuri is actually a place in Delhi, okay, and it is not a very what you can say a very highly developed colony or what. It is basically again a place that is being put up for the displaced refugees and likewise people. So again the people from low strata live there, and the place lacks again basic facilities. Okay. A place on the periphery of Delhi, that means on the edge of Delhi, within the boundary of Delhi.
सीमापुरी, जैसे कि अगर उसके नाम का हम मीनिंग देंगे सीमा, ठीक है, कि किसी की चीज की सीमा है, बाउंड्री पर, यानी कि नाम सीमापुरी है, लेकिन तब भी जो दिल्ली है, यानी कि जो कैपिटल ऑफ इंडिया है, उससे बहुत दूर है, मेटाफोरिकली बाय। जो दिल्ली है, दिल्ली इज नोन फॉर इट्स grandeur, splendor, and for a comfortable means of livelihood. But there are many places within Delhi of which we are unaware, जो हम अभी भी नहीं जानते हैं, many people do not know. तो उसमें से एक प्लेस है सीमापुरी, जहाँ पर वो उस तरीके की लाइफ साइकिल है ही नहीं. दैट्स व्हाई शी सेज मेटाफोरिकली, दैट मीन्स कि नाम तो उसका रख दिया सीमापुरी, बट एक्चुअल में इट्स डिफरेंट. सो मेटाफोर इज दैट ओनली. ओके, the place lacks the essential facilities. Okay, the place lacks the essential facilities of life. So that is the thing. Those who live here are squatters who came from Bangladesh. Again, the refugees, the people who were either forced or who came here for, in search of food and proper shelter in 1971. So that was the period of war. Okay, when so many people, many families were displaced, जिन्हें अपना देश forcefully छोड़कर आना पड़ा, अपना सब कुछ छोड़कर आना पड़ा due to the terrible circumstances in their country. So Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness, मतलब एक तरीके का जंगल हुआ करता था, forest. बट इट वो अभी भी वाइल्डरनेस है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, मतलब खाली नहीं है. वो उस टाइम पर कम्प्लीटली फॉरेस्ट था, बट अभी वो खाली नहीं है. ठीक है, तो द थिंग इज कि वहाँ पर अब क्या हो गया, स्ट्रक्चर्स ऑफ मार्ट, रूफ्स ऑफ टिन, टारपोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, ये 10,000 रैग पिकर्स. तो वो जो पूरा प्लेस है, दैट इज मेंट फॉर रैग पिकर्स, यानी कि पीपल बिलोंगिंग टू लो स्ट्राटा, एंड अगेन दे आर डिवॉइड ऑफ बेसिक कम्युनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ. ठीक है, जो लाइफ को जीने के लिए जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज होती हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट दैट दे आर लिविंग ऑन. और आयरॉनिक बात क्या है कि दे हैव कम टू दिस प्लेस इन सर्च ऑफ अ बेटर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. ठीक है, लेकिन एक्चुअली में उन्हें क्या मिलता है, उन्हें ये मिलता है. सो दैट इज आयरनी. ठीक है, आयरनी है, सरकाजम है, कि वॉट दे एक्सपेक्टेड एंड वॉट दे आर एक्चुअली गेटिंग. Without an identity, without permits, so in fact they don't have an identity, proper valid documents, but with ration cards that get their names on voters list. सिर्फ रेशन कार्ड्स हैं that they get their names on voters list and enable them to get grain, यानी कि खाना मिल जाता है उनको. then an identity. तो this is again a sarcastic line कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है उनके लिए, सर्वाइवल, खाना. आइडेंटिटी का कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता उन लोगों की तरफ से, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सो व्हाट ऑल दे नीड इज सर फूड, खाना, राइट. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. So this sentence is important, we can say, as we at the end of the day we can feed our families and go to bed. We would rather live here than in the fields that give us no grain. A group of women in tattered saris, when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. So the writer is asking कि why you have left your hometown, कि आपने अपना होम टाउन और अपनी वो ब्यूटीफुल मेमोरीज क्यों छोड़ी. फॉर अ ग्रुप ऑफ विमेन, टैटर्ड मीन्स torn sarees. So that shows कि even they are so poor that they cannot afford to proper clothes. Torn. So this says that it is better कि at least we are not going to bed hungry, यानी कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, खाना, कि एटलीस्ट हमें खाना तो मिल रहा है. तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके कि
आप उसकी आपने अपनी वो लैंड इस छोड़ दी, अपनी मतलब लैंड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए खाना है कि एटलीस्ट आपका और आपके बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ रहा है. सो यू कैन सी द मिजरी, द काइंड ऑफ पेन दीज पीपल आर सफरिंग. इतना कुछ दे हैव सफर्ड इन देयर लाइफ, एंड पॉवर्टी इज ओनली वन कांस्टेंट इन देयर लाइफ. एवरीथिंग हैज चेंज इन देयर लाइफ. और उनकी लाइफ में अगर कुछ परमानेंट रह गया है तो दैट इज पॉवर्टी ओनली. ठीक है, दैट दे आर पुअर. ओके, wherever they found food, they pitch in their tents and that become transit homes. Transit homes means makeshift homes. मतलब कि परमानेंट होम्स नहीं है. जहाँ भी उन्हें खाना मिलता है, जहाँ वहीं पर वो अपना टेंट लगा देते हैं. तो दैट मीन्स दे डोंट इवन हैव अ सॉलिड रूफ ओवर देयर हेड्स. तो बच्चे उसी एटमॉस्फेयर में बड़े होते हैं, उसी एटमॉस्फेयर में ग्रो करते हैं, और धीरे धीरे फिर वो भी अपने पेरेंट्स की तरह पार्ट का उसी का पार्ट बन जाते हैं. बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. यानी कि उनके लिए सिर्फ क्या है, रैग पिकिंग इज इम्पोर्टेंट. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread. So now she is again using the word gold, okay? और gold क्या है? Daily bread, a roof of their heads, even it's a leaking roof. But for a child, it is even more. तो parents के लिए garbage क्या है? Survival. कि garbage में से जो भी उन्हें मिलता है उससे वो खाना ले पाते हैं. उनके सर पर एक रूफ है, चाहे फिर वो रूफली क्यों ना करती हो. बच्चों के लिए मीनिंग उसका डिफरेंट है. ओके, बच्चों के लिए उसका मीनिंग डिफरेंट है. सो व्हाट डू दे मीन? आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट. तो बच्चों के लिए वहाँ पर मीनिंग है गार्बेज को फाइंड आउट करने में कि दे आर लुकिंग फॉर समथिंग मोर, फॉर द बेसिक फैसिलिटीज के, नॉट द बेसिक यूटिलिटी आइटम्स. दे आर लुकिंग फॉर सम मनी कि लकीली दे कैन गेट सम मनी. यानी कॉइन मिल जाता है, एक रुपए का सिक्का मिल गया, या अगर बहुत ज़्यादा रखनी है तो इवन देन दे कैन गेट अ 10 रुपी नोट. सो दैट इज वॉट शी मीन्स बाय गोल्ड इन द गार्बेज. इट्स अ हाइपर बोल. ओके, कि एक्चुअल में हमें ये फील करे गोल्ड की बात हो रही है, बट गोल्ड नहीं है. शी इज नॉट referring to the actual gold, the element, okay, that is used for making jewelry, but the other kind of gold. और वो गोल्ड का मीनिंग डिफरेंट है. पेरेंट्स के लिए डिफरेंट है, बच्चों के लिए डिफरेंट है. तो बच्चों के लिए वो गार्बेज का मीनिंग ये भी हो सकता है कि दे कैन गेट अ पेयर ऑफ शूज, ओके, सो दैट दे कैन कवर देयर फीट. सो दिस इज द crux of the lesson till now. We will continue it again tomorrow, and I hope you are able to understand it easily. If there are any doubts, you can please drop a comment, and I would be happy to help you out. So please like, share, and subscribe the video and the channel.